Hello everyone, welcome to Awaken Citizen Program, session 12, year 1. This session is divided into two parts. Part A is creating values. In this part, students discover our physical possibilities of creating a value and discover the capabilities we develop because of it. And the other part B, expanding the limits of my world. In this part, students explore the possibility of expanding the limits of my world and discover the qualities and capacities that they can develop because of it. And now today's session, we will explore two more of our physical possibilities, creating values and expanding the limits of my world. In part A, unit 1, let's explore the world of people who are creating value. For example, how does the cheese or butter we eat come to us? Here is the picture in front of you. A farmer's breed, example, buffaloes, cows, and make milk available for people and factories to use. Here is the another example. Factories workers, engineers, supervisors, technicians make many new milk products like cheese, curd, ice cream, etc. by processing this milk. And here is the another example. The factory workers pack these into bottles, boxes, etc., which allows these products to reach faraway cities and towns without getting spoiled. So this is the another example. The milk products produced in the factory have to reach us, the transporters, just like the truck drivers, motormen, shippers, provide their services and bring them to our neighborhood like shops, dairy, etc. Here is the another one, shopkeepers. The shopkeepers make these milk products available near our homes when we need them. And this is me. That means a child. You can say that means आप भी इसमें हो सकते हैं. तो देखिए एक पर्सन ये पूछा गया आपसे कि जब हम कोई भी चीज़ या बटर मिल्क जब हम खाते हैं तो वो हमारे पास तक कैसे आता है. सो आपने पूरा प्रोसेस देखा कि वो हमारे पास तक कैसे पहुंचता है. सबसे पहले जो फार्मर्स होते हैं वो गायें भैंसों को पालते हैं, उनसे लोगों के लिए दूध तैयार करते हैं, उन्हें फैक्ट्रीज़ के यूज़ के लिए भी तैयार करते हैं. फिर जब वो फैक्ट्रीज़ तक आता है तो वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर और सुपरवाइजर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं जो उस दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए और उसमें जो भी उसमें एडिशंस उन्हें करने पड़ते हैं उन प्रोडक्ट्स को, और साथ साथ उनसे नए प्रोडक्ट बनाने में भी, जैसे चीज़ उसी से बनता है, कर्ड, आइसक्रीम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो आप तक पहुँचती हैं. फिर ये कि आप तक पहुंचने के लिए अभी भी प्रोसेस उनका पूरा नहीं हुआ. यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो उसके लिए भी काम करते हैं. अब कोई भी चीज़ होगी वो आपको पैक करके भी देनी पड़ेगी, पैकेट्स में आएगी. सो जैसे दूध होता है उसे बॉटल्स में पैक किया जा सकता है, आपके चीज़, पनीर, कर्ड वगैरह है उसे बॉक्सेस में डाला जाता है. तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे दूर दूर तक जितने भी सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं आपके, जहाँ मतलब बिना ख़राब हुए वहाँ तक वो पहुँचाए जाते हैं. उसके बाद आते हैं वो आपके कि उसे एक प्रॉपर जगह तक, एक प्रॉपर स्थान तक और प्रॉपर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए. तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट काम करते हैं. वो सारे मिल्क प्रोडक्ट जो भी फैक्ट्रीज़ में उन्हें पैक्ड फॉर्म में मिला है उसे सारे ट्रांसपोर्टर्स जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स होता है, मोटरमैन होते हैं, शिपर्स होते हैं, वो अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन्हें आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, आपके नेबरहुड तक लेकर आते हैं, यानी उन शॉप्स तक लेकर आते हैं जहाँ से आप इजीली ले सकते हो, या आपके आसपास जो डेयरी होती है वहाँ तक वो सारे मिल्क प्रोडक्ट भिजवाए जाते हैं. अब देखिए शॉपकीपर है, जैसे यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल हैं या आपके घर के आसपास जो भी शॉपकीपर्स हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है वो आप उससे ले सकते हैं.
तो इस तरह से हमें वो चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं जो हमारी ज़रूरत होती है, और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतने बड़े प्रोसेस से चलकर इतने लोगों का सहयोग हमें मिलता है. Now let's explore the world of people who are creating values. जो हमारे लिए मूल्यों का सृजन करते हैं, अब उन लोगों के बारे में भी हम जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू द कार्स वी ट्रेवल इन come to use. This is the case too. And first example is here, car designers and automotive engineers plan and designs car that are comfortable for us. They also test them to make sure they are safe for us. See the second picture here. Engineers, factory workers, steel technicians and engine makers manufacture the different parts of the car like the steel body and engine, etc. And the next step is production managers, machine operators, workers and quality inspectors assemble the car parts and build the car so that it works perfectly as per the design. And here is the next process. Car carriers, drivers, transporters take the car from the factory to places all across the country, or you can say the world, on special trucks, ships, etc. कई बार जब आप रास्ते में चलते हैं तो बहुत लंबी बड़ी लॉरियाँ, गाड़ियाँ आपने देखी होगी जिसमें बाइक्स या कार्स वगैरह को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस. शोरूम डीलर्स make the cars available to customers and salespeople help them choose the best car for themselves. And at last, we get a car, and now me going on a ride in a car. So we can say then all of these people create value in their own ways. We call them value creators. यही हमारे मूल्य सृजनकर्ता होते हैं जो हमारे लिए चीज़ों को बनाकर एक मतलब हम सब पर्सन्स के लिए भिजवाते हैं. जैसे फर्स्ट हम कह सकते हैं कौन है जो कि हेल्पिंग हैंड्स बनते हैं हमारे. शोरूम डीलर्स, इंजीनियर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, सेल्स पर्सन्स एंड फार्मर्स एंड मैनी अदर्स मोर. तो इन सबसे ये तो आपने समझा कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोशल लाइफ है, उसमें एक अकेला इंसान अपने लिए सारी चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकता. सो ये वैल्यू क्रिएटर्स ही होते हैं जो कि हमारी जीविका को, हमारी जो लिविंग स्टाइल होता है उसे ईजी से ईजी बनाने की कोशिश करते हैं. सो वो चाहे हमारे फूडिंग प्रोडक्ट्स हों या हमने जैसे देखा व्हीकल्स हैं या और चीज़ें हैं. इवन यू कैन से जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, हमारे घर में जो फर्नीचर है या हमारे घर को भी जो बनाते हैं, दैट मीन्स हम इसी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं. एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाते हैं. सो फर्स्ट यूनिट में हमने जाना कि जो वैल्यू क्रिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे लिए. And now in part A, unit 2, we know about that. Then why are value creators important to us? Let's explore this through some examples. This is the exploration 1 in front of you. How value creators help my life. For example, the food I eat. So is the first picture. Who has grown the food I eat? आप देखते ही पहचान गए होंगे. Then who is the person? The next one is who has brought it from the farms to us. And here is the next one. From whom do we buy all the vegetables, fruits, grains, etc. And who makes it into a healthy and tasty meal for me. So after that, me eating the food. So all these persons are the helping hands for me. So here's another slide in front of you. Farmers, that the person who grow healthy and good quality grain, fruits, vegetable for me, and transporters bring these grains, vegetables, etc. for me. And here is the mother, use these grains and vegetables to cook tasty and healthy, and shopkeepers buy
and store grains, vegetables, etc. for us. Here is another exploration. How value creators help my life. In example 2, when I go to school to get educated. So here's the first picture you can see here. Who takes me fees who takes my fees and manages the school office records. And see the second one also. Who takes me to school and brings me back home? Who keeps my school premises clean and who teaches me? And me at a school, कि जब मैं स्कूल में होता हूँ तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? मेरे लिए. So here you are seeing the another slide in front of you. The school office staff make sure that the school is running smoothly. That means all the work that is necessary for the school, that is done by school staff. School bus driver and conductors take me to school and bring me back home safely. And here is the cleaning staff make sure that the school is kept clean and clean for us, kept neat and clean for us. Watchmen guard and protect us so that we are safe. So here the teachers give me knowledge and prepare me for the future to live and work as a responsible member of society. And now here me as a happy child at a school. See the another exploration. How value creators help my life. In example 3rd, when I am ill and need medicines. So here the picture 1. Who suggests the right medicines to treat my illness? And from whom do my parents buy my medicines? Who makes the medicines in factories? And here is the last picture. Then who has done research to create new medicines that can cure illness? And here is the me when ill. यानी कि मैं अगर ज़रा सा बीमार होता हूँ तब भी देखिए कितना बड़ा प्रोसेस है, कितने लोगों का चक्र है जो कि मेरे लिए पूरी तरह से वैल्यू क्रिएटर्स बनते हैं, मेरी लाइफ में हेल्प करते हैं. So in this slide you are able to see, so doctors and nurses treat my illness and gives me the right medicine so that I get well soon. Pharmacists and medical shopkeepers store good quality medicines so that my parents can buy from them when needed. Medicine factory workers produce good quality drugs and pack them well so that they are correctly labeled and don't get spoiled before they reach me. And here is the last one. Researchers and scientists make new drugs that will be more and more effective to cure my illness. यानी कि मेरी बीमारी में ये सब मेरे लिए वैल्यू क्रिएटर्स का काम करते हैं. So students, you are seeing here so many value creators, and this is not a last end. That means more other also exist in our life. All these and many more value creators work to create value in my life. I can live my life smoothly because of them. Just like that, farmers, school office staff, transporters, doctors, school bus conductors, shopkeepers, scientists, cleaning staff in school, my mother, medicine factory workers, teachers, chemists, and many more, etc. So students, think of more value creators in your life, explaining the values he or she creates, and please discuss to your parents, to your classmates about this. तो अभी तक हमने सीखा कि वैल्यू क्रिएटर्स क्या करते हैं हमारे लिए, फिर हमने सीखा कि वैल्यू क्रिएटर्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. एंड नाउ वी विल लर्न इन पार्ट ए यूनिट 3 exploring what happens to us when we create a value in the work we take up. When I grow up, I too can choose to become a value creator in whatever profession I take up. Let's explore which of my infinite qualities
and capacities are awakened when I become a value creator. So here is the exploration. When I become a value creator, I awaken my capacity to manage many things. So first is manage money, like an accountant who manages money, bills, payments, budgets, etc. Manage people, like a manager in a company who manages people, what they make, how they make it on time, etc. And what does a librarian manage? Think about that. And what does a traffic पुलिस पर्सन मैनेज, यानी कि आप जिस प्रोफेशन में आगे फ्यूचर में जाएंगे तो एक तरह से आप भी और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएटर का काम करेंगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग आपके लिए वैल्यू क्रिएटर का काम कर रहे हैं, आगे आने वाले कमिंग फ्यूचर में आप बहुत से लोगों के लिए उसी तरह से एक अमूल्य सृजनकर्ता की तरह से काम करेंगे। सो लुक एट द पिक्चर थर्ड। जो एक लाइब्रेरियन होती है वो मैनेज करती है बुक्स को। अ लाइब्रेरियन मैनेजेस बुक्स। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी आपको बुक्स मिलती हैं पढ़ने के लिए। एंड अ ट्रैफिक पुलिसमैन मैनेजेस ट्रैफिक एंड क्राउड्स, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो शायद रोड पे बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन हो जाएगा। सो हर एक का वर्क उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। In future, when I become a value creator, I awaken my capacity to develop myself by improving my skills. Just as a doctor or surgeon, a doctor learns to develop her surgery skills, how to do better operations. And see the potter, a potter learns to develop her pottery skills, how to make better pots. And here is the next one. What skills can a salesperson develop? What skills can a computer operator develop? So see in this slide, a salesperson learns to develop her selling skills, how to sell better. So बिल्कुल same like that, a computer operator learns to develop her computer skills, how to use software like Word, PowerPoint, Excel, etc. Here's the another exploration. When I become a value creator, I awaken my capacity to serve others. Transporting pupils. A train motorman serves passengers by transporting them safely on time. Developing others. A teacher develops other people by teaching them and helping them learn. Making useful products. A business person makes products that are useful, affordable, and of good quality for people to use. So think about that, children. Then how can a nurse serve others? How can a shopkeeper serve others? So see this slide. A nurse cares for patients and nurses them back to good health. वो इनकी हेल्प करके मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में मदद करती हैं. A shopkeeper serves customers by paying attention to their needs and giving them products they need. क्योंकि अगर शॉपकीपर्स भी नहीं होंगे तो आपको ज़रूरत की चीज़ों के लिए बहुत दूर तक भागना पड़ेगा. तो आपके नेबरहुड में जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो आपकी मदद करते हैं आपके सारी जो हाउस होल्ड आइटम्स की जितनी भी नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने में. Now see this exploration. When I become a value creator, I awaken my capacity to do work properly. Learn to work systematically. This secretary comes to work on time, plans her work to do it efficiently. ठीक है, तो आप जॉब तो कहीं भी करेंगे, आपको पता है कि आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा. आप टाइम पर ऑफिस पहुंचेंगे, जो आपको काम दिया गया है आप उसको प्रॉपरली करेंगे, जिसको आपको हैंड ओवर करना है उसे आप ठीक से हैंड ओवर करेंगे. लर्न टू डिलीवर टू टारगेट्स. द ऑफिसर मेक्स श्योर
he finishes the work given to him and delivers on time. यानी कि यहाँ पर तो पहले वो सिस्टम बनाएगा अपने वर्क का कि मुझे टाइम पे कैसे करना है. सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा कि उसे वर्क को फिनिश करके जिसको देना है, जिसे डिलीवर करना है, उसे भी टाइम पर डिलीवर करना है. Learn to solve day-to-day problems. This engineer solves several problems so that their work gets completed and goal is met. सो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने उस गोल को अचीव करने के में, जो भी आपका लक्ष्य होता है उसे अचीव करने में आपको डे टू डे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है और वहाँ पर आप एक दूसरे की मदद से भी वो काम कर सकते हैं. लर्न टू वर्क विद अदर्स टू अचीव गोल्स. तो दीज कुक्स वर्क टुगेदर टू मेक फूड फॉर अ पार्टी ऑर्डर. अब एक पार्टी का ऑर्डर खाली एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन तो पूरा नहीं कर सकता, बेशक वो बहुत ज़्यादा बेस्ट कुक क्यों ना हो, उसे एक टीम की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पर यही है कि हम सीखते हैं अपने गोल को हमें अचीव करना भी होता है, लेकिन हम एक टीम वर्क को करना सीखते हैं. लर्न टू पे अटेंशन टू डू गुड क्वालिटी वर्क. सो दिस पेंटर मेक श्योर हिज वर्क इज़ नीट एंड ब्यूटिफुल. सो पेंटर होगा कोई भी या वाइट वॉश वाला होगा, वो पहले अपने काम को करेगा, उसे प्रॉपरली ऑब्जर्व करेगा, जहाँ भी उसे कमी लगेगी तो वो उसे दोबारा से रीफ्रेम करेगा. सो thus as a value creator I awaken my capacity to manage many things. मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना आ जाएगा. ठीक है, जैसे हमने सीखा कि हमें टाइम पे काम करना आना, ट्रैफिक पर और रोड्स पर अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, ऑफिसेज में, शॉप्स में हम अपने काम को कैसे मैनेज करेंगे. कैपेसिटी टू डेवलप माई सेल्फ बाई इम्प्रूविंग माई स्किल. जैसे एक डॉक्टर एक सर्जन होता है तो उसे क्या होगा कि मैं और ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर बनूँ और ज़्यादा बेस्ट सर्जन बनूँ, मैं अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकूँ. एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहेगा कि मेरा काम और ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट हो, जो भी न्यू थिंग्स आ रही हैं उन्हें भी मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ. कैपेसिटी टू सर्व अदर्स. मैं दूसरों की सेवा करने की ज़्यादा से ज़्यादा और हिम्मत जुटाऊंगा. अब एक नर्स होगी, अगर कितनी भी नर्स होंगी उनमें से एक बेस्ट क्यों कही जाएगी, क्योंकि वो अपने पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होगी. सिर्फ उसे मेडिसिन से मतलब नहीं होगा, उसे अपने पेशेंट की हेल्थ से भी मतलब होगा कि जल्दी से जल्दी वो क्योर करके उन्हें घर भेजे. उसी तरह से कि जो एक शॉपकीपर होगा वो किस तरह से सेटिस्फाई करता है अपने कस्टमर को. एंड कैपेसिटी टू वर्क प्रॉपरली. तो ऑफिसेज में हम अपने काम को पूरे मैनेजेबल तरीके से करें, ऐसे ही जैसे जो भी सर्विंग चीज़ें होती हैं कि वहाँ जो भी हमारा कस्टमर है हम उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएँ अपने वर्क को और वो हमारे वर्क में कोई कमियाँ ना निकालें. सो यूनिट 1 में तो हमने ऐसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया और ऐसे लोगों के वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जो कि हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे थे. फिर हमने वहीं पर पार्ट ए की यूनिट 2 में सीखा कि जो वैल्यू क्रिएटर्स होते हैं वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं. फिर वहीं पर पार्ट ए के यूनिट 3 में हमने जाना कि किस तरह से जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वो अपने वर्क को, जो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं दैट मीन्स आगे आने वाले फ्यूचर में, तो वो अपने वर्क को किस तरह से लेते हैं, कैसे करते हैं, यानी कौन से सिस्टम से करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, वो हमने सीखा. अब हम आते हैं पार्ट बी पर. And in part B, we now explore the next physical possibility, and that is expand the limits of my world. In part B, unit 1, we learn about what does expanding the limits of our world mean to us. Let's explore this through an example. Here you are seeing the picture. That is a mother and a child. Meet Jay. Jay's world as a baby. Suppose Jay wanted to explore the limits of this world, so where all would he explore? तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो उसका संसार, दुनिया आपको दिखाई दे रही है कितनी है, लेकिन अगर जय एक्सप्लोर करना चाहता है अपने लिमिट्स को, अपने संसार को, अपनी जो सीमाएं हैं उसे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा. Students, see this picture. The limits of world Jay explores are his cradle, the various rooms of his home etc. यानी कि जब वो पैदा होता है तो उसे क्या मिलता है, अपना एक पालना मिलता है, जो उसे लगता है जब वो पालने में लेटता है कि वही उसकी दुनिया है. फिर जब वो उसी जिस कमरे में वो पालने में है उस कमरे तक घूमता है, जैसे वो अपनी मदर के साथ घूम रहा है, तब उसे लगता है कि ये रूम ही उसकी दुनिया है, यही उसका संसार है. सो एज अ बेबी
Thus Jay has expanded the limits of the world from what he knew when he was born. So see here, when Jay's world as a 3-year-old. So यहाँ आप देख रहे हो कि वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, सारे प्लेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं. सपोज जय नाउ वांटेड टू एक्सप्लोर द लिमिट्स ऑफ हिज वर्ल्ड वेयर ऑल कुड बी एक्सप्लोर. तब वो क्या क्या एक्सप्लोर करेगा. सो हियर यू कैन सी द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड जय एक्सप्लोर्स आर हिज स्कूल, द पार्क, द बेंच एटसेट्रा. तो यहाँ पार्क में वो घूमने जाता है तो उस रूम से उसकी जो दुनिया है वो बाहर निकलती है. जब वो आउटसाइड अपने पेरेंट्स के साथ कहीं विजिट करता है तब जो उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हैं, एक्सपैंड होती हैं. ऐसे जब वो स्कूल में जाता है तो भी उसका दायरा बढ़ता है क्योंकि अब वो घर से अभी तक से पार्क और बाहर के आउटर प्लेसेस में गया तो एक स्कूल भी उसकी एक अलग नई दुनिया बनती है. और इसी तरह से जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो उसका जो भी लिमिट्स होती हैं वो उसी तरीके से और ज़्यादा एक्सपेंड होती रहती हैं. So thus Jay has expanded the limits of the world he knows just as a baby and just as a 3-year-old. So now see in this picture Jay's world as a 12-year-old. So suppose Jay now wanted to explore the limits of his world where all could be explored. आप सारी पिक्चर्स देख पा रहे हो स्क्रीन पर. The limits of the world Jay explores are his neighborhood, the shops nearby, the playgrounds etc. अब वो अकेला भी जाता है. अभी तक क्या था, अगर वो पार्क में जा रहा था, कहीं बाहर जा रहा था 3-year-old में, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता था या स्कूल तक उसकी दुनिया थी, स्कूल से सीधा घर. लेकिन अब अगर वो स्कूल भी जाता है तो आप देखो वॉकिंग टू स्कूल, वो रास्ते से अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा तो पड़ोस से निकलते हुए जाएगा, बहुत सारी शॉप्स उसके रास्ते में आएंगी, है ना. शाम को वो प्लेग्राउंड में खेलने भी जाएगा, आसपास की बहुत सारी चीज़ें उसे देखने को मिलेंगी. गोइंग टू शॉप्स in the locality, exploring the area while playing and playing cricket on the street and playgrounds. So यहाँ उसकी limits जो हैं वो और ज़्यादा expand हो रही हैं. Thus Jay has expanded the limits of the world he knows just as a baby, just as a 3-year-old and just as a 12-year-old. तो आप ये तो देख ही चुके हैं कि कितना एक्सप्लोर कर चुका है वो अपने वर्ल्ड को. And now Jay's world as a 21-year-old. Suppose Jay now wanted to explore the limits of his world where all could be he explore. So you can see here, traveling within the city, शहर के अंदर भी जा सकता है, going to the college in a different city, या शहर के बाहर भी किसी और कॉलेज में जा सकता है तो वहाँ दुनिया उसकी और एक्सपेंड हो जाएगी. Staying in a hostel away from home, गोइंग ट्रैकिंग और whatever, कहीं भी घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सो द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड Jay explores have expanded to a new city, the forest and hills nearby etc. Thus Jay has expanded the limits of the world he knows just as a baby, just as a 3-year-old, just as a 12-year-old and as a 21-year-old. और यहीं पर तो उसकी जो लिमिट्स है वो एंड नहीं हुई है क्योंकि जैसे जैसे उसकी और एज बढ़ेगी, जब वो जॉब में जाएगा और दूसरी जगह पर और फैमिली से मिलेगा, ठीक है, जस्ट एज अ मैरिड पीपल होगा तो वहाँ पर और उसकी जो लिमिट्स हैं, वो जो उसका वर्ल्ड है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होता चला जाएगा. सो इन पार्ट बी यूनिट 1 वी लर्न व्हाट डज एक्सपेंडिंग द लिमिट्स ऑफ आवर वर्ल्ड मीन टू अस. So now in part B, unit 2, if what? So here's the exploration. If you decided to expand the limits of your world to the entire earth and beyond, what all could you explore? So you're able to see many pictures on the screen. So first click to explore, then what is here? So in first example, you can explore the depths of the oceans. Oceans and deep sea explores, going into the depths of ocean to explore what others don't dare to. लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर एक इंसान यहाँ तक पहुँचता है, यानी कि ये कुछ ऐसे लोगों के हैं जो अपने वर्ल्ड को, जो अपने संसार को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ अर्थ तक नहीं, बियॉन्ड द लिमिट भी वो उसको बढ़ाना चाहते हैं. सो लाइक हियर्स द एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट
Ballard has conducted more than 120 deep sea expeditions. He is a pioneer in the use of deep diving submarines. He has made the historic discoveries of the sunken Titanic ship, the German battleship Bismarck, and many other ancient and new shipwrecks around the world. And here is the next one. You can explore the highest mountains. So mountain climbers climbing the highest mountains that no man has climbed before. यानी कुछ ऐसा करना जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो. So like Edmund Hillary and Tenzing Norway, who became the first mountain climbers to have reached the summit of Mount Everest. ये भी आपका beyond the limit है. And here is the another one. If you can explore the most dangerous forest. So exploring dangerous forests, exploring the deepest parts of the most dangerous jungles that have been beyond the reach of man until then. यानी अब तक किसी और ने वहाँ तक जाने के कोशिश न की हो या डेयर न किया हो. So like that, Ed Stafford was the first man to walk on foot. ठीक है, पैदल गए थे ये the entire length of the dangerous Amazon forest, infested with giant snakes, insects, animals, the hostile tribals, taking more than 2 years to do it. See this also. If you can explore caves deep within the earth, exploring ancient caves, exploring the dark and ancient secrets hidden inside the earth, going beyond caves' non-limits. So like Fernand Petzl was fascinated to explore what lay beyond the caves' non-limits. He created equipments to discover some of the deepest cave in the world. In 1955, he was a part of the legendary team that broke the record and reached 1000 meters inside Geoffrey Berger Cave. This is the next one. If you can explore new lands. So exploring new and unknown lands, like in the 15th century, Christopher Columbus set out on a new sea route to discover new lands, hoping to reach India, and he discovered America instead. If you can explore outer space. So यहाँ तो beyond the earth जा रहे हैं. अभी तक तो earth की ही explore हो रही थी, and now this is the exploration beyond the earth. Exploring outer space, going where no man has gone before. Like Kalpana Chawla, the first Indian woman to go into outer space. सो फर्स्ट यूनिट में तो हमने सीखा कि अगर हम अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करते हैं, अपने वर्ल्ड की लिमिट्स को, तो उसका क्या मतलब होता है हमारे लिए. दूसरों में हमने देखा कि अगर आप एक्सप्लोर करते हैं या आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो अपनी लिमिट से भी बाहर, जो मेरे वर्ल्ड की जो लिमिट्स है मुझे उससे भी बाहर एक्सप्लोर करना है, तो क्या होता है. एंड नाउ इन पार्ट बी यूनिट 3, एक्सप्लोरिंग व्हाट हैपन्स टू अस व्हेन वी एक्सपैंड द लिमिट्स ऑफ आवर वर्ल्ड. So see this exploration, students. Which of our infinite qualities and capacities are awakened when we expand the limits of our world? ये सारी पिक्चर्स देखिए और इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप ओपन डिस्कशन कर सकें. अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ कीजिए, ओपनली डिस्कस कीजिए कि अगर आप इन लिमिट्स तक भी पहुंचना चाहते हैं तो आप अपनी कौन सी कैपेसिटीज़ को, कौन सी क्वालिटीज़ को awaken कर पाएंगे. See in this slide, when I expand the limits of my world, I awaken my. So here's the first one, urge to seek out and wholeheartedly enjoy new and unusual experience. So see here, this diver was studying the ocean bed when he suddenly has a visit from an unexpected visitor. He enjoys the beautiful sight. And see here the next one. This mountain climber is enjoying the view
from the mountain peak far more beautiful than he could ever imagine. And here is the next one. This astronaut has a breathtaking view of the earth from the moon. So यहाँ देखा आपने कि जब कोई भी पर्सन नए और अनेक अनोखे अनुभवों को पूर्ण रूप से आनंद उठाने की जिसके अंदर तीव्र इच्छा जागृत होती है, तो वो किस तरह से अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं। जैसे पहले में आपने गोताखोर देखा ही, जो कि बिल्कुल समुद्र की तलहटी में जाता है, वहाँ का सुंदर दृश्य जब वो देखता है तो वो उसके लिए बिल्कुल अनोखा होता है। ऐसे ये पर्वतारोही है जो पर्वत की चोटी से दिख रहे दृश्य का बड़ी खुशी से आनंद ले रहा है और वो उसकी कल्पना भी कर पा रहा है। ये जो अंतरिक्ष यात्री है जो चंद्रमा से पृथ्वी के जो दृश्य है उन्हें देख रहा है, उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा है। In next example, when I expand the limits of my world, I awaken my courage to face to the unknown. मैं जगा पाऊंगा ना उस साहस को कि जो मेरे लिए बिल्कुल अनजानी चीज़ है, मैं उसके बारे में जान पाऊँ। During a deep sea exploration, these deep sea divers suddenly find themselves face to face with a shark. So they deal with the shark and try to get away. और ये तो हम मनुष्य की प्रवृत्ति है ना कि जब हमारे सामने जैसी सिचुएशन जैसी परिस्थिति होती है तो उससे डील करना हम अपने आप ही सीख जाते हैं। So here is the next slide. When I expand the limits of my world, I awaken my capacity to respond positively to new situations and uncertain conditions. So here during a jungle expedition, this explorer and his team lose their way, but they stay calm and learn to survive with whatever water and they have and food from the forest around until they find their way back to known ground several days later. So ये तो कहा ना कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने लिए साधन ढूंढ ही लेता है जीने के। तो यहाँ देखो कि वो रास्ता भूल गया, लेकिन उसके बाद भी उसने और उसकी टीम ने अपने को वहाँ पर सर्वाइव करने के साधन ढूंढ ही लिए कि जो भी वहाँ पर अवेलेबिलिटी थी, जैसा भी पानी था, जैसा भी फूड था, उसे खाकर जब तक कि उसे वो रास्ता मिला जहाँ से उसे वापस जाना था। So students, here is the summary. In today's session, we explored two of our possibilities. First is creating values. In this we learn about when I create value, I awaken my capacity to manage many things, capacity to serve others, capacity to develop myself by improving my skills, and capacity to do work properly. And another possibility, expanding the limits of my world, I learn when I expand the limits of my world, I awaken my courage to face the unknown, urge to seek out and wholeheartedly enjoy new and unusual experiences, and capacity to respond positively to new situations and uncertain conditions. So देखा आज के इस सेशन में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी कि अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसका प्रबंधन मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे उस क्षमता को जागृत कर सकता हूँ, दूसरों की सेवा करने की क्षमता को कैसे जागृत कर सकता हूँ, अपनी कुशलताओं में यानी कि मेरे अंदर जो और गुण हैं उसमें और मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, अपना विस्तार और कैसे कर सकता हूँ, कोई भी कार्य जो मुझे दिया जाए उसे उचित ढंग से करने की क्षमता को भी मैं विकसित कर सकता हूँ जब मैं मूल्य का सृजन करता बनता हूँ आगे आने वाले फ्यूचर में। इसी तरह से जब मैं अपने संसार का विस्तार करता हूँ तो मैं अज्ञात का सामना करने का साहस रख सकता हूँ, यानी जो मेरे लिए अननोन है, अभी तक जिनके बारे में मैं नहीं जानता उनके बारे में जान सकता हूँ। नए व अनोखे अनुभवों का पूर्ण रूप से आनंद उठाने की अगर तीव्र इच्छा मेरे अंदर है तो ऑब्वियसली मैं उसके साहस कर सकता हूँ वहाँ तक पहुँचने की और नए और अनिश्चित परिस्थितियों से सकारात्मक रूप से निपटने की भी क्षमता मैं अपने अंदर जागृत कर सकता हूँ। So now this is the end of session 12 year 1. Hope you like